Good morning, students. Welcome you all in my online lecture. Today I am going to explain you third part of the story The Rat Trap. So in two parts I have already explained to you about the rat trap sailor. First of all, he met an old person. He gave him shelter. He offered him hot porridge and gave him tobacco to smoke. Not only this, he entertained him by giving company. So this shows that man is a social animal. He can't live all alone. In every field of life, he needs the help of someone or the other. There are few people who don't live to socialize with others. They stay away from their fellow beings. They shirk the company of their friends and become lonely. So they are overpowered by negative feelings. So this is a wrong notion. So the peddler, he was lonely and thought that the world is nothing but a big rat trap. Always left to this meditation till he met the crofter, iron master, and his daughter. So in this part I will explain you the second part in which he met iron master. So let me recall you. The iron master, he was the owner of Remso Iron Mill. Remso Iron Mill का owner था, and his main ambition was just to produce good quality of iron. When peddler, he was staying at the forge में रुका था because it was extreme cold outside and it was raining heavily. So he got shelter inside the forge. Then iron master came for his nightly round. Iron master nightly round के लिए आता है in order to inspection. The owner of the work was very particular about the quality of the iron he produced. उसका मेन पर्पस था कि अच्छी क्वालिटी का आयरन प्रोड्यूस किया जाए. So when he saw an stranger, a vagabond, he was lying. So he looked him, his face. He felt sure that the peddler was one of his old regimental comrade captain. उसको लगा कि ये व्यक्ति उसका पुराना दोस्त है, who was his old acquaintance. He bent just close to him. He looked the way people of his type. जब वो उसके पास गया, उसने बहुत ध्यान से उसको देखा. So he mistook him as his old comrade. उसको थोड़ी गलत फहमी हुई और उसको लगा कि ये व्यक्ति कैप्टन है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन. So he addressed him. उसके पास जाके उसने बहुत ध्यान से उसका चेहरा देखा और उसको एड्रेस किया. ओ नील सोलोव, हाउ यू डू लुक लाइक. उन्होंने कहा तुमने क्या हाल बना रखा है. द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर. और पेडलर ने आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था. नॉट ओनली दिस, ही डिडंट नो हिज नेम. और उसको आयरन मास्टर का नाम भी नहीं पता था. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस. लेकिन आयरन मास्टर को लग रहा है कि ये परिचित चेहरा है और वो उसका साथी है. देन ही डिडंट रिवील हिज आइडेंटिटी. पेडलर ने अपनी पहचान नहीं दिखाई एंड ही रिमेन्ड साइलेंट. नाउ ही केम अंडर द टेम्पटेशन. अब उसको लगा कि आयरन मास्टर एक रिच पर्सन है और हो सकता है उसकी
उसकी स्थिति को देखकर उस पर थोड़ा वो तरस खाएगा एंड ही वुड थ्रो हिम कपल ऑफ क्रोनर, और वो कुछ जो हैं क्रोनर्स उसको दे देगा एंड ही वुड हेल्प हिम। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद मी, ही सेड। नाउ आयरन मास्टर सेड, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। आयरन मास्टर ने उससे कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, दैट वॉज द मिस्टेक, तुमने बहुत बड़ी गलती की। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, और अगर मैं उस समय सर्विस में होता तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देता। इट नेवर वुड हैव हैपन्ड। वेल, नाउ ऑफ कोर्स यू विल नेवर होम विद मी, so Iron Master invited him to his home. Go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade that however didn't please the tramp. Iron Master invited him to his manor house. Manor, a very big bungalow, we can say haveli. आयरन मास्टर ने उसको अपने घर इनवाइट किया बिकॉज दिस वॉज क्रिसमस टाइम, एंड क्रिसमस इज़ नॉट ओनली टू शेयर गिफ्ट्स एंड स्वीट्स ओनली, बट द मेन पर्पस ऑफ सेलिब्रेशन इज़ टू हेल्प दोज पीपल हु आर नीडी, पुअर, डिप्राइव्ड एंड डेस्टिट्यूट। जो लोग गरीब हैं, जो लोग ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करना, ये भी फेस्टिवल्स का एक पर्पस है। एंड आयरन मास्टर ही वॉज ए ट्रू क्रिश्चियन, सो इट वॉज द टाइम ऑफ क्रिसमस। नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। बोथ द पर्सन्स दे वर थिंकिंग डिफरेंटली। पैडलर को लग रहा है, हालांकि वो नील्स ओलोफ नहीं है। आयरन मास्टर मिस्टूक हिम, आयरन मास्टर से गलती हुई एंड ही कुड नॉट रिकग्नाइज द पर्सन। वो उसको नील्स ओलोफ अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहा है, जबकि वो नहीं है। लेकिन वो चुप रहा, ये सोचकर कि हो सकता है ये मेरी कुछ हेल्प कर दे। सेकेंड थिंग, गोइंग विद हिम टू द मैनर हाउस मीन्स throwing himself into the lion's den। अब उसको लगता है कि अगर मैं आयरन मास्टर के साथ उसके घर गया तो अपने को जानबूझकर, डेलिब्रेटली, वॉलंटरली मीन्स डेलिब्रेटली, इंटेंशनली एक शेर की गुफा में डालना। सेकेंड थिंग, ही हैड स्टोलन 30 kroners फ्रॉम ओल्ड मैन। उसने ओल्ड मैन के, ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 kroners चोरी किए थे। सो देयर वॉज फियर ऑफ बीइंग कॉट रेड हैंडेड, दैट्स वाई ही वॉज अफ्रेड एंड ही डिडंट वांट टू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को लग रहा है कि ये मेरे साथ इसलिए नहीं जाना चाह रहा बिकॉज ऑफ हिज शेबी अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। उसको शायद शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कांट शो योर सेल्फ देयर। आयरन मास्टर continued, he said, Elizabeth is dead as you may already have heard। जैसा कि तुमने सुना होगा कि एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है। एलिजाबेथ वॉज हिज वाइफ एंड ही टोल्ड माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे लड़के अब्रॉड में हैं, एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई एल्डेस्ट डॉटर। कहता है कि मेरी ओल्डेस्ट डॉटर के अलावा और मेरे अलावा घर पे कोई नहीं है। एंड यू नो दिस इज़ क्रिसमस टाइम एंड वी वुड बी हैप्पी इफ़ यू वुड गिव अस कंपनी। सो ही इन्वाइटेड हिम, बट स्ट्रेंजर सेड नो
and no and again no, and the iron master saw that he must give in. Stranger refused, and he flatly refused by saying no. He didn't want to accept his invitation. It looks as though Captain Bonistelli preferred to stay with you tonight, he said to the master blacksmith, turned on his heel. But he laughed to himself as he bent away. Blacksmith, who knew him, understood very well he had not said his last word. It was not more than half an hour. आधा घंटा भी नहीं हुआ था. Half an hour later, the sound of carriage wheel was heard outside the forge. बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़. ये कैरिज व्हील से है, which is run by carriage. Iron Master's daughter came here. New guest. She was Iron Master's daughter, followed by a valet. Valet means servant, who was carrying a big fur coat. She introduced herself as Edla Wilmanson. और उसने उसको अपने को एड्रेस किया. She said that her name is Edla Wilmanson. She noticed that the man was afraid. उसने नोटिस किया कि वो व्यक्ति थोड़ा डरा हुआ है. She thought that either he had stolen something or else he had escaped from jail. उसको लगा ये या तो इसने कोई चीज़ चुराई है या वो जेल से भाग के आया है. She, however, assured him he would be allowed to leave them just as fairly as he had come. She addressed him respectfully as captain and requested him to stay with them over Christmas Eve. It was her compassion, love, and friendly manner, in what manner she was talking. Now he could take confidence on her, and he accepted her invitation. Earlier, the peddler refused the invitation which was given by the iron master, but his daughter, Edla Wilmanson, she was having better understanding. It was her mutual understanding, love, care, compassion, empathy. So he was ready to go with him. Father and daughter, Iron Master and his daughter, both were pole apart in their thinking, temperament, and attitude. Edla Wilmanson, she had better persuasion power, and she could analyze the person. She suspected that the person was not seeming educated. Either he had escaped from prison, or he had stolen something. So she was having better power to analyze the people. Now she entered, followed by a valet carrying on his arm big fur coat. So in the end, what happened? That she assured him that he would not have any problem, and this was Christmas Eve. She said this in such a very friendly manner that the red trap peddler agreed to go with her. The fur coat was thrown over his rags. He followed the young lady to the carriage. On the way, the peddler thought why he had taken that fellow's money. Now the peddler was repenting. He confessed himself. Why did he steal the money of that old person? So he thought himself, why did he come under the temptation? He was just cursing himself. So dear students, the next part of the video will be continued, and in my next part of the video I will explain you the concluding part of the story, and in the end of the story the peddler was totally transformed person.
Till now he met three persons. First, an old person, and second, the iron master. Now he met his daughter. He met the crofter, the iron master, and his daughter. The meeting with all these people taught him the need of human bonds. They insisted him to stay with them and spend some time. They provided him the basic necessities of life. Thus, he was made to realize that no one can live all alone in this world. Feeling of love, human bonding is